तो आज आम कौन डिस्कशन करवा ना आज क्लास रे आम देखा जो इंस्टांस सेक्शंस रे थिला इंस्टांस कैटेगरी रे इंस्टांस सेक्शंस रे तो आम देखले गोटे लॉन्च टेम्पलेट राइट गोटे कैटेगरी अछि लॉन्च टेम्पलेट तो आज बुझिबा लॉन्च टेम्पलेट रो काम कोन राइट लॉन्च टेम्पलेट what is the work of launch template why we need this launch template and then आम देखा यूजर डाटा एडवांस सेटिंग से यूजर डाटा केमती होची आउ तार टर्मिनेशन प्रोटेक्शन से हमें जानिचे कौन पे टर्मिनेशन प्रोटेक्शन यूज हुए आज सिलेक्ट करी चेक करी देखिबा टर्मिनेशन प्रोटेक्शन केमती काम करूची राइट तो फर्स्ट हमें लेट्स मूव विथ द लॉन्च टेम्पलेट ओके बेसिकली लॉन्च टेम्पलेट ता कौन आउ हमें काहे की सेटा दरकार राइट तो आमे जितबे सर्वर फर्स्ट क्रिएट करिचे राइट तो आमे कोन करने सर्वर क्रिएशन से हमर बेसिक थिंग्स हमें कोन हमको दरकार गोटे सॉफ्टवेयर फर्स्ट हमें सिलेक्ट करू को सॉफ्टवेयर हमको दरकार तापर हार्डवेयर सिलेक्ट करू राइट सॉफ्टवेयर जब एएमआई फर्स्ट वी हैव टू चूज द एएमआई तो को प्रकार हमको एएमआई दरकार तो सही एएमआई हमें चूज कला परे हमें इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करबा जो कॉन्फ़िगरेशंस ता कोन कॉन्फ़िगरेशंस दरकार रिसोर्स टाइप राइट तापर देन कोन करबा हमें मशीन्स क्रिएट करबा तो जो मशीन हमें क्रिएट करूची राइट मैनुअली तो हमको बहुत हम रिक्वायरमेंट हिसाब से हमको वन बाय वन सिलेक्ट करिया को पड़ुची राइट तो लॉन्च टेम्पलेट रे कोन होची ना इन व्हाई वी नीड लॉन्च टेम्पलेट लॉन्च टेम्पलेट रे काम कोन होची ना हमें गोटे जेमती टेम्पलेट गोटे प्रकार टेम्पलेट रे जोथि के हमें सब प्रकार इन्फॉर्मेशंस हमको जहां दरकार राइट तर हमको को टाइप रो एएमआई दरकार कौन इंस्टेंस टाइप दरकार को टाइप रो इंस्टेंस दरकार इंस्टेंस टाइप राइट इंस्टेंस टाइप एएमआई हमरो नेटवर्क राइट नेटवर्क देन हमरो सिक्योरिटी ग्रुप राइट तो हमें कौन करबा ना आ सहित तो बहुत सारा ऑप्शन अछि जोटा कि हमें गोटे टेम्पलेट रे ऐड करि दबा तो लॉन्च टेम्पलेट बेसिकली कोन होछि ना गोटे काइंड ऑफ रेसिपी गोटे काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस तमे गोटे टेम्पलेट रे रखुचो जोटा कि तमे मशीन क्रिएशन करबा पय यूज करबो मशीन क्रिएट करबा पय यूज करबो बा इंस्टेंस क्रिएट करबा पय यूज करबो तो हमें जतबे इंडिविजुअली हमें जतबे मशीन गोटे क्रिएट करूचे तो हमको ये सब वन बाय वन हमको सिलेक्ट करबा पड़ुची राइट तो हमें लॉन्च टेम्पलेट रे कोन करबा ना हमको जहां दरकार हमें गोटे टेम्पलेट करिकरी सेटा गोटे लॉन्च टेम्पलेट रे स्टोर कर दबा तो लॉन्च टेम्पलेट स्टोर करला नेक्स्ट टाइम जतबे हमें गोटे इंस्टेंस क्रिएट करबा कि मशीन क्रिएट करबा तो हमें सीधा लॉन्च टेम्पलेट को ही सिलेक्ट करबा आ किछि ऑप्शन दवा पड़ी तो ये सब मैनुअली हमें देला पर जब हमको जो टाइम लागुतला सपोज 2 to 3 मिनिट्स लागुतला टाइम राइट तो वर्तमान हम कौन करना यूजिंग लॉन्च टेम्पलेट्स विद इन फ्यू सेकेंड्स वी कैन क्रिएट वन मशीन ओके तो हमें देखिबा लॉन्च टेम्पलेट कोन आ तर जानिले कोन लॉन्च टेम्पलेट और काहे यूज कराबो तो लेट्स सी हाउ वी कैन सेट अप द लॉन्च टेम्पलेट तो जतो तमे EC2 इंस्टेंस लॉग इन करिवो वंस यू लॉग इन टू द EC2 इंस्टेंस सॉरी AWS account go to the EC2 instance EC2 services and there you will find instance section we have launch templates here right our launch templates अछि तो ये launch templates रे हमें कोन करबा click on launch templates create launch template okay then what we have to do select the launch template name suppose I'll give as demo template something I'll give as demo template okay I give us demo template here then what will happen a template version right so we have to mention the version what versions whether you are creating for productions or creating for development so you can just mention it here right suppose I'll mention it as for dev okay and template tags why we need tag is required actually this meta tags or tags is required to identify a resource suppose ये tag रे हमें ना दे दवा जमती suppose मु देबी कि name just name आ ना कोन दबा हमें suppose दबा कि गोटे
जेकोसी धर सपोज एटा हमें ए जो टेम्पलेट हम यूज करछे पर्टिकुलर किसी सर्वर पाई सपोज देबी की डेव सर्वर नेम अच्छे डेव सर्वर तो डेवलपमेंट सर्वर क्रिएट करिया पे हम ए टेम्पलेट यूज करछो जस्ट ଗୋଟେ सिंपल नेम हम किछि भी देई परिबो राइट एटा होछि कोन ना बेसिकली इट इज ऑप्शनल ओके ऑप्शनल अछि तमे चले दबो न नहीं बट आमे जदि यूज करबा टैग ना हमको बेनिफिट सती पय हबो जे आमे कोनसी जति आमे गोटे तो रिसोर्स की दुईटा रिसोर्स जदि कंपनी गोटे काम करबा गोटे की दुईटा रिसोर्स न मल्टीपल रिसोर्स रे काम करतवा तो विथ टैग वी कैन आइडेंटिफाई द रिसोर्स इजीली तो सती पे हमें टैग ता दबा राइट तो सोर्स टेम्पलेट तमर किछि ऑलरेडी टेम्पलेट अछि त तमे सोर्स करि पारिबो सोर्स टेम्पलेट जदि किछि ऑलरेडी टेम्पलेट अछि देन तमे सोर्स करि पारिबो तो हमर किछि ऑलरेडी टेम्पलेट नाही राइट हम फ्रेश टेम्पलेट क्रिएट करूचे तो आमे कोन करबा ना किसी ऑप्शन सिलेक्ट करिबा नेक्स्ट आसीबो कंटेंट तो एठी आमे जतबेले मशीन क्रिएट करिबा राइट फर्स्ट आमे कोन दो एएमआई अमेजन मशीन इमेज तो एटा एएमआई आमे सिलेक्ट करिबा फर्स्ट राइट तो आमे सपोज मते दरकार अमेजन मशीन अमेजन और कोन करबी सर्च करिबो नले ब्राउज मोर एएमआई ओके तो एटी सर्च कले अमेजन जेतला हम लिखि अमेजन रही अमेजन मशीन इमेज आसुची तो जोटा कि फ्री टियर अछि से फ्री टियर रे हमें सिलेक्ट करिबा फ्री टियर रे हमें सिलेक्ट करिबा राइट तो अमेजन लिनक्स 2023 सिलेक्ट राइट सिलेक्ट हो गला तो एएमआई सिलेक्शंस पर हम सिलेक्ट करिया पड़े को टाइप रो हमको कॉन्फ़िगरेशन दरकार तो इंस्टेंस टाइप राइट तो इंस्टेंस टाइप लेट्स गो विथ T2 micro free tier so based on a requirement you have to select right तुम्हारा कंपनी रिक्वायरमेंट कि तुम्हारा पर्सनल यूज रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट थी सही हिसाब से तमे कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करिवो तो हमर रिक्वायरमेंट हिसाब रे हम T2 micro सिलेक्ट करबो राइट देन की पेयर तमे को की पेयर दबा को चाहछो तो एठी कोन करछि ना डोंट इंक्लूड इन लॉन्च टेम्पलेट ता माने ना जदि आमे लॉन्च टेम्पलेट रे इंक्लूड न करिबा ताले हम तले लॉन्च टेम्पलेट यूज करके जब मशीन क्रिएट करिबा इंस्टेंस क्रिएट करिबा तो सही टाइम रे हमको की दबा को पड़िबो तो मैं जदि आगुरु की ऐड कर देतिबा ताले की दबा को आउ पड़िबोनी राइट तो बेसिकली तमे की ऐड करि पारो बाकी न भी ऐड करि पारो तो वर्तमान मु डेमो B12 कीटा ऐड कर देली राइट तो नेटवर्क सेटिंग एठी भी सही ऑप्शन सेम ऑप्शन देछि whether you want to select the security group or not तो बेसिकली ए ऑप्शंस ता मोस्टली तमे न दबाटा ही भलो काई कि ना देखो जेतेबेले हमें मशीन क्रिएट करिवा सपोज ए टेम्पलेट नै कि मु बहुत सारा मशीन क्रिएट करिया अछि तो किछि मशीन बा किछि इंस्टेंस मते किछि पर्टिकुलर सिक्योरिटी एक्सेस दरकार आउ किछि मशीन की अलगा सिक्योरिटी एक्सेस दरकार तो मु जदि ए टेम्पलेट रे गोटे सिक्योरिटी अटैच करि देतिबी तो कोन हम ना तो मशीन क्रिएट से सेम सिक्योरिटी ग्रुप सबुतरे ऐड करि चलिबो राइट तापर हमकु पुनी मैनुअली चेंज करिया को पड़िबो तो सेटा एटा न करी कि हमें कोन करिया बे रखि दबा डोंट इंक्लूड इन लॉन्च टेम्पलेट तो कोन होबना हमें तो इंस्टेंस क्रिएट करबा बा मशीन क्रिएट करबा सही टाइम रे हमें सिक्योरिटी अटैच करि पाइबा ओके तो so what we can do we can just select or in our demo purpose we can select it okay so हम हिसाब रे specify a custom value तो हमर सिक्योरिटी जोडा मु यूज करूची सबनेट specify custom values do subnet mu select कर देली okay subnet let it be okay or specify a custom value sorry just select which subnet you want which availability zone you want suppose mu चाहू छी availability zone 1b रे create हो तो मु बाय specify कर दल जे एई पर्टिकुलर टेम्पलेट ता केवल availability zone 1b रे ही create हो राइट मु सेट कर देली देन आसीबो security existing security group right so demo B12 storage type so storage type we can select by default देखो से नहीं छी कोन 8 gigabyte okay by default and this is your root volume हमें जदि चाहबा ताकू एडिट करबा पई तो we can edit it here एठू जेते भी दरकार तुमको तुम एडिट कर परिबो तापरे एटा हलो वॉल्यूम 1 एएमआई रूट वॉल्यूम तुम यदि नुवा वॉल्यूम चाहछो आउ किछि वॉल्यूम ऐड करबा पई then you can go ahead and add new volumes okay तो रिसोर्स टैग तुम ऑप्शनल अछि तुम दबा दबो तो एडवांस डिटेल्स ता नेक्स्ट इट लॉन्च टेम्पलेट सब तापर नेक्स्ट वर्जन जब टेम्पलेट हम कथा बा
तापर मु advanced details ऊपर discussion करिवा, right? For now let's leave this advanced details. Go ahead and summary details रे मु कोन नै छी T2 micro नै छी demo v12 the fire security group नै छी Amazon Linux 2023 AMI नै छी, right? How 8 GB रो volume नै छी, right? Then go ahead and create template. Successfully created. What is this? Successfully created. Now let's go ahead, view launch template, and this template will not cost you anything. पैसा पड़िबन, राइट? एटा फ्री अछि, बट ए टेम्पलेट जस्ट गोटे माने कोन गोटे इंस्ट्रक्शंस फाइल तमे गोटे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखिलो तो तमे से चार्ज करबन, बट सही टेम्पलेट यूज करी कि तमे जदी किछ मशीन क्रिएट करछो एक्स्ट्रा मशीन्स फ्री टियर करे तो सेटा को तुमको पेमेंट करबा को पड़िबो, राइट? तो ओके, सो तमे हमें तो टेम्पलेट क्रिएट कले एठी देखिबा ना टेम्पलेट आईडी गोटे यूनिक आईडी गोटे देला टेम्पलेट आईडी, देन टेम्पलेट नेम आउ तार डिफॉल्ट वर्जन। तो टेम्पलेट जतो हमें क्रिएट करूछ ना से प्रति क्रिएशन से गोटे गोटे वर्जन क्रिएट करिवो, राइट? गोटे गोटे वर्जन क्रिएट करिवो। तो फर्स्ट वर्जन हमें तो क्रिएट कले डिफॉल्ट वर्जन 1, लेटेस्ट वर्जन भी 1 अछि, राइट? तो क्रिएशन टाइम एंड सब हमें जान पारे। तो हमें लॉन्च एटा सिलेक्ट करिबा तो आ विषय मोर डिटेल्स हमें पाई परिबा डिफॉल्ट वर्जन लॉन्च टाइप आ कोन सब सिलेक्ट हेछि कंप्लीट इंस्टेंस डिटेल स्टोरेज टाइप रिसोर्स टाइप नेटवर्क एडवांस सब डिटेल्स एंड पाइबा टेम्पलेट रे कोन ऐड अछि। तो देखि सला पर तमे जदी रिक्वायरमेंट तमरो चेंजेस करिवार अछि तो टेम्पलेट रे तमे चेंज भी करि पाइबो, राइट? तो क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट क्लिक, सॉरी एटा लॉन्च टेम्पलेट गला तो हमरो ऑलरेडी गोटे लॉन्च टेम्पलेट हमें क्रिएट करछे। नाउ हमें कोन करबा ना वर्तमान एही लॉन्च टेम्पलेट यूज करी गोटे हमको मशीन क्रिएट करबा इंस्टेंस क्रिएट करिया अछि, राइट? तो हम कोन करबी ना लेट्स गो अहेड लॉन्च टेम्पलेट रे नो क्लिक करी हमें गोटे ड्रॉप डाउन जो अछि क्लिक करिया, राइट? तो हमें एठी कोन करिया लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट तमे एठी भी जाई करी लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट करि परिबो, नले भी सेही लॉन्च टेम्पलेट जोटा हमें क्रिएट करछे सेटा को सिलेक्ट करी ए एक्शंस रु जाई करी लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट एठी यूज करि परिबा, राइट? तो हमको नॉर्मल वे रे हमें जीवा इंस्टेंस से जीवा तो फर्स्ट लॉन्च टेम्पलेट करिबा तो लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट सिलेक्ट। तो एठी हमको किछि सिलेक्ट करिया पड़िबो खाली गोटे टेम्पलेट जो टेम्पलेट नाटा हमें सिलेक्ट करछे सही टेम्पलेट डेमो टेम्पलेट, राइट? डन हेगला। टेम्पलेट वर्जन से पचारिबो जेतो हमको डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट से नहीं गला 1 टेम्पलेट डिफॉल्ट 1 लेटेस्ट 1 टेम्पलेट अछि नहीं गला। बाकी डिटेल्स से ऑटोमेटिकली टेम्पलेट रे जहां अछि बाकी डिटेल्स से ऑटोमेटिकली देगा सब ऑटोमेटिकली नहीं गला, राइट? तो हमको वर्तमान किछि करिवार नै सीधा जाई कि लॉन्च इंस्टेंस तो हमें कोन कले खाली हमें एग्जैक्टली तो हमें जो यूजर जो अकाउंट नॉट यूजर आईडी जो अकाउंट रे तमे लॉगिन करिछो जो अकाउंट रूट अकाउंट रे लॉगिन करिछो सही रूट अकाउंट रे लॉन्च टेम्पलेट रहइबो सही अकाउंट रे टेम्पलेट ता रहइबो तमर। तो टेम्पलेट तमे जते भी यूजर लॉगिन करछन्ती तो सही यूजर माने पर्टिकुलर अकाउंट रे जते यूजर लॉगिन करछन से टेम्पलेट यूज करि पारिबे रूट अकाउंट रे रहि, राइट? जोटा रूट अकाउंट मींस जोटा AWS क्रिएशन कला जो अकाउंट ता यूज होची सही अकाउंट रे तमरो रहइबो। तो एठी कोन करने मु केवल गुटे सोर्स टेम्पलेट यूज करी बस सरला अब किसी दरकार नहीं। नेक्स्ट गो अहेड एंड लॉन्च इंस्टेंस डन इंस्टेंस नाउ लॉन्च्ड। सो सेम थिंग तो एठी हम सिलेक्ट करिया पड़िलानी कारण हमें ऑलरेडी टेम्पलेट रे सब जहां जहां दरकार हमें ऐड करी देइछे, राइट? लेट्स गो अहेड एंड व्यू लॉन्च टेम्पलेट not launch template view go to instances जेतो हमें इंस्टेंस गोटे क्रिएट करि दैछे, राइट? देखो इंस्टेंस पेंडिंग स्टेट रे अछि जस्ट रिफ्रेश started running now started running, right? So just wait for few seconds and we'll just log into this machines, okay? तो हमें कौन की यूज करथिले demo v12 that is the key we used to create the machines during creations we had used it and the same key we'll use to connect to the server सेम की हमको दरकार तो हमें भी यूज करते लोटे सिक्योरिटी ग्रुप तो से सिक्योरिटी ग्रुप रे हमरो जो पोर्ट को व्हाइट लिस्ट कराई छी, राइट? व्हाइट लिस्ट माने जोडा एक्सेस प्रोवाइड कराई छी पर्टिकुलर पोर्ट को तो सही पोर्ट रे हमें कनेक्ट कर परिबा, राइट? तो लेट्स सी दिस वन
this machine is started running. See, okay, now we got the public IP. Let's log into. Okay, so what we can do now, log into the machines. Suppose this demo B12, right? So change it. So what is the default user? EC2 hyphen user. So EC2 hyphen user आमे login करिवा. तो demo B12 आमे करिकरी से नारे आमे रखिची. तो केवल IP address मते चेंज करिया पड़ला बैक ऑटोमेटिकली कनेक्शन हे गला, राइट? तो देन सो देखो EC2 user already आमे कनेक्टेड हे गले आउ बाकी सर्वर we can able to connect it, right? तो लास्ट क्लास रे आमे देखितले जे गोटे अपाची सर्वर आमे इंस्टॉलेशंस करितले, राइट? अपाची सर्वर इंस्टॉलेशंस करतले. तो अपाची सर्वर इंस्टॉलेशन करी कि तादे आमे किछि इंडेक्स फाइल भी क्रिएट करतले जोटा कि अपाची सर्वर रन हेतला, राइट? तो वर्तमान आमे देखिबा लॉन्च टेम्पलेट आमे जानिले आईडिया पाइले लॉन्च टेम्पलेट द्वारा आमे क्रिएट करि परिबा, राइट? तो नेक्स्ट एठाला गोटे फर्स्ट वर्जन आमे क्रिएट करतले लॉन्च टेम्पलेट 1 वर्जन, लेटेस्ट वर्जन इज 1. द नेक्स्ट आमे जले क्रिएट करिबा तो मु किछ मॉडिफाई करिबा को चाहू छी, राइट? तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आवर रिक्वायरमेंट चेंजेस एंड देन वी हैव टू डू द मॉडिफिकेशन सम चेंजेस रिक्वायर्ड. तो मु तो सब किछ चेंज करबी तो ता ऊपर कोन करिया पड़िबो ना चेंज कला माने जोटे नुवा वर्जन क्रिएट करी लेटेस्ट वर्जन इट विल क्रिएट. सो लेटेस्ट वर्जन रहबा हमर सपोज वर्जन 1 अछि लेटेस्ट वर्जन 2 हे जो, राइट? तो मु एबे कोन करबी लेट्स कम आउट फ्रॉम दिस. देन तो एठी कोन हैला ना हमर मशीन क्रिएट होची तो हमें जानछि केमति टर्मिनेट करिवा, राइट? So you have to go select this machine instance state. Either if you want to stop it, you can stop or terminate it, right? So हमें terminate कर दवा. Terminate हो गला, right? तो next जितना हमें create करिया machine तार से machine रो बहुत सारा options अच्छे actions रे तुम सब बता देंगे details रे, right? Okay. So now this machine is terminated. हमें machine terminate कर दे. Now कौन करिवा ना हमें चलो आउतरे लॉन्च टेम्पलेट हमर रिक्वायरमेंट चेंजेस हेगला. नाउ मु जो अपाची सब मते गोटे रिक्वायरमेंट अछि मु ए जो लॉन्च टेम्पलेट मते बहुत सारा सर्वर क्रिएट करिवार अछि. दुईटा कि मते दुईटा रिक्वायरमेंट अछि मते दुईटा सर्वर रिक्वायरमेंट हिसाब रे मते दुईटा सर्वर क्रिएट करिवार अछि. रिक्वायरमेंट आई वांट टू इंस्टेंसेस टू बी क्रिएटेड. ओके, टू इंस्टेंसेस कौन दरकार मते अपाची सर्वर दरकार httpd to be installed apache server. Okay, apache http server दरकार. तो ता सहित मते गोटे एप्लीकेशंस वेब एप्लीकेशंस होस्ट करियार अछि. वेब एप्लीकेशन गोटे होस्ट करियार अछि, राइट? तो मते एति की करियार अछि तो ता सहित मते कोन अछि Amazon Linux नली ता आउ गोटे मोर रिक्वायरमेंट आसला ना टर्मिनेशन प्रोटेक्शन मते ऑन करियार अछि ऑटोमेटिकली. टर्मिनेशन protections to be on, right? Protection on करिवार अछि, राइट? तो मते एति की फर्स्ट चेंजेस करिवार अछि कोठी टेम्पलेट रे, राइट? टेम्पलेट रे मते चेंज करिवार अछि. तो मु कोन करिवे ना टेम्पलेट को जिबी. सो वेयर वी कैन गेट द लॉन्च टेम्पलेट इज पाइबा हमें लॉन्च टेम्पलेट सेक्शन रे टेम्पलेट ना अछि. तो मु कोन करिवे सिलेक्ट करिके एक्शन मॉडिफाइड टेम्पलेट. तो मॉडिफाई जतला हमें टेम्पलेट करिवा एटी क्रिएट न्यू वर्जन गोटे it will create a new version, right? Create new version. So modify template. So template name demo template अच्छी already default रहिला. तो template version तो हमें जदि version सेठी हमें कौन थिला dev थिला तो मैं एठी चाहिए जदि किछि और अलगा ना देख देब dev 1.1 और 1.0 और 1.1 dev एठी देली मु dev 1. तम हिसाब रे तमे जा भी देलो, राइट? एटा मैटर करूनी नाटा तमे जा भी देलो वर्जन dev 1. बट ए मैटर करिबा एति पई तमे जो डिस्क्रिप्शन दोउचो से डिस्क्रिप्शन हिसाब रे तमे इजीली फाइंड करि परिबो जेटा कोन पई यूज करछि. मु देली dev 1.1 with apache server suppose अछि httpd installed. तो आमे जणे देखि कि वर्जन ना रे जानि परिबो जे द apache server अछि टेम्पलेट रे, राइट? तो मु सिलेक्ट कली
ओके सो बाकी जहाँ अच्छी से रहिला तो मते कौन करिवार अच्छी ना तो बाकी जहाँ अच्छी से रखला किंतु हमरो वर्तमान मु तुमको एडवांस सेक्शन रे गोटे यूजर डाटा ऊपर वर्तमान बतेबी यूजर डाटा कौन पे यूज करा हुए राइट ओके तो बिफोर दैट इंस्टेंस प्रोफाइल आई एम इंस्टेंस प्रोफाइल किस दरकार नहीं इंस्टेंस टाइप छाड़ तो हम कौन कहतले हमर रिक्वायरमेंट फर्स्ट रिक्वायरमेंट कौन अछि अपाचे इंस्टॉलेशंस देन एप्लीकेशंस डिप्लॉय कराबो देन टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ऑन तो हमर टर्मिनेशन प्रोटेक्शंस देखो ए टेम्पलेट रे देछि डोंट इंक्लूड इन लॉन्च टेम्पलेट दैट माने कोन अछि ना हमें लॉन्च टेम्पलेट इंक्लूड करबन इंक्लूड न बाय डिफॉल्ट रोच ऑफ रोच टर्मिनेशन प्रोटेक्शन बाय डिफॉल्ट ऑफ रोय तो तमे जदि क्रिटिकल सर्वर गोटे बनाउछ कि एप्लीकेशन बनाउछ देन बेटर तमे सब बेले टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को ऑन करो तो हमें काहे की टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ऑन रखिबा टर्मिनेशन प्रोटेक्शन माने टर्मिनेट न होबा पय गोटे प्रोटेक्शन दबा जे सर्वर टा हमर टर्मिनेट होबनी तो कोन पय रिक्वायरमेंट टा फर्स्ट बुझिबा पड़िबो हमहु काहे की दरकार टर्मिनेशन प्रोटेक्शन डिपेंड अपन एप्लीकेशन तो आमर जब धर किसी क्रिटिकल एप्लीकेशन रन हो भी किसी एप्लीकेशन आमर प्रोडक्शन पे अछि कि किसी एप्लीकेशन चली तो आमे सब बेले चेष्टा करबा जे केमति सर्वर टा एक्सीडेंटली डिलीट न हो कि बाय चांस के किसी एडमिन किसी सिलेक्शन कर बाय चांस टर्मिनेट मार दला जेमति कहा द्वारा भी टर्मिनेट न होई पर किबा के जानि सुन कि टर्मिनेट न कर राइट तो आमे कोन करबे टर्मिनेशन प्रोटेक्शन टा ऑन करि दबा ऑन कर देला ना बाकी जदि एक्सीडेंटली भी क्लिक हैला तो ऑटोमेटिकली हबनी ताकू जेते पर्यंत तमे डिसेबल न करिछ राइट तो सेटा हमें टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को ऑन करिवा तो हम रिक्वायरमेंट गोटे हैला टर्मिनेशन तो हमें कोन करबे एनेबल करिवा टर्मिनेशन प्रोटेक्शन एनेबल तो हम ए टेम्पलेट रे ऐड कर देले एनेबल राइट तो नेक्स्ट कोन हैला हमको ऐड इंस्टॉल करियार अछि एचटीटीपी आ एप्लीकेशन बनेवार अछि राइट तो आमे गोटे पाइले यूजर डाटा सेक्शंस अछि गोटे यूजर डाटा सेक्शन तो यूजर डाटा सेक्शंस इटा कोहा जाय यूजर डाटा सेक्शंस बा ताकू कोहा जाय यूजर डाटा सेक्शंस यूजर डाटा बा ताकू कोन कोहा जाय हमर यूजर डाटा बा बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट यूजर डाटा बा बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट ओके तो ये जो यूजर डाटा और बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट दा कोन पे यूज कराऊ फर्स्ट हमें एटा जानिबा कोन आ कोन पे यूज कराऊ तो व्हाट इज दिस तो यूजर डाटा जते बळे हमें गोटे सर्वर जते बळे क्रिएट करिवा सर्वर बूट करिवा राइट सर्वर क्रिएट करिवा राइट सर्वर क्रिएशन टाइम रे तो कौन हम ना जो यूजर जो डेटा प्रोवाइड करथिवो जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करथिवो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए अपडेट हो जाए राइट जे कौन सी आइदर तमे किछि कॉपी करबा चाहौ छ कि किछि इंस्टॉल करबा चाहौ छ तो ऑटोमेटिकली से कौन हम ना इंस्टॉल हो जिवो कि अपडेट हो जिवो तो व्हाटएवर यू वांट टू अपडेट इन द मशीन्स ड्यूरिंग द क्रिएशन टाइम तो हमें तो मशीन क्रिएट करवा तो बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट बा यूजर डाटा द्वारा हमें कौन करवा सेठी मशीन रे अपडेट करि परिबा किछि इंस्टॉल करि पारे तो गोटे क्वेश्चन भी एमती पचारि पारंती तुमको हमें मशीन क्रिएशन टाइम रे केमती गोटे एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा तो से माने क्वेश्चन को बुलाई कि पचाए हमें केमती गोटे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर एमती पचारबे कि कैन वी इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन ड्यूरिंग मशीन क्रिएशन yes we can so how the last how केमती तमे क्रिएट करि पर ना हमें यूजर डाटा और बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट यूज करि पारि तो हमें जान ले एटा कोन राइट व्हाट इज द यूआरएल इज सो ना बुझेबे तो बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट जोटा कि लाइन हमरा यूज कराबो क्रिएट करिया पई माने इंस्टॉल करिया पई ड्यूरिंग बूटस्ट्रैप ड्यूरिंग बूटिंग टाइम रे बा क्रिएशन टाइम रे तो हमें जान ले एटा कोन ना हमें जानिबा एटा काहे की दरकार तो हम कोन पय दरकार हमें जते बळे गोटे सर्वर हमें क्रिएट करूचे राइट तो हमें सर्वर गोटे हो कि दुईटा हो कि 10टा सर्वर क्रिएट करछे तो सर्वर क्रिएशन टाइम रे कोन होछ ना हमकु ता पर इमीडिएटली हमकु किछि एप्लीकेशन इनबिल्ट दरकार राइट तो किछि गोटे इमीडिएट गोटे लाइब्रेरी किछि इंस्टॉल करिवार अछि राइट तो हमें कोन कल अननेसेसरी हमें काहे की पूणी सर्वर सरीला परे पूणी इंस्टॉल करिवा ता अपेक्षा काहे हमें यूजर डाटा सेक्शन से बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट रे काहे न देकरी हमें
करि परिबा राइट तो हमें एठी कोन होला ना ये जो स्क्रिप्ट आम लिखुचे यूजर डाटा सेक्शन से लिखा है कौन होगा सेटा इंस्टॉल हो गला पर ऑटोमेटिकली 10टा सर्वर अपग्रेड हो गला अपडेटेड हो गला तो जेतबे हम लॉगिन करबा तो हमको अननेसेसरीली आउ थरे नेक्स्ट टाइम करिवार नाही राइट तो सब अपडेट हो गला तो सेति पे हमको यूजर डाटा सेक्शन रे ऐड करिया पड़ियो चलो एबे देखिबा केमती हमें करि परिबा राइट यूजर डाटा सेक्शन रे तो मते एठी गोटे कोन लिखियार अछि गोटे स्क्रिप्ट लिखियार अछि जेहेतु एटा लाइनक्स मशीन तो हम कोन लिखिबी सेल स्क्रिप्ट लिखिबी राइट लाइनक्स सेल स्क्रिप्ट लिखिबी तो लाइनक्स सेल स्क्रिप्ट ता बस बा ऊपर बुझेबी हमर लाइनक्स क्लासेस नेक्स्ट क्लास हमर लाइनक्स क्लास रहियो हला लाइनक्स क्लास रे बुझेबी तुमको बिन बास तापर कोन होचे मु गोटे किछि स्टेटमेंट लिखिबी तो मते मो रिक्वायरमेंट हिसाब रे राइट तो मते कोन करियार अछि ना मते फर्स्ट कोन अछि अपाची गोटे इंस्टॉल करियार अछि राइट तो व्हाट इज द कमांड टू इंस्टॉल अपाची सर्वर अपाची एचटीटीपी सर्वर खाली हमें लास्ट क्लास रे देखितले sudo yum so it is sudo दरकार नहीं it automatically root रे जे फर्स्ट क्रिएशन होची दरकार नहीं तो हमें दबा yum install तो yum टा कोन package manager so yum is a package manager to manage the packages in the linux machines manage the packages in the so एठी हमें कोन करबा ना apache server रो पैकेज ता इंस्टॉल करबा तो ता पे हमको yum पैकेज मैनेजर दरकार yum yum राइट तो yum इंस्टॉल पैकेज apache server http पैकेज ना हला httpd राइट तो हाइपन यस इंस्टॉल httpd तो इंस्टॉल परे हमको कोन करियार अछि किछि फाइल क्रिएट करियार अछि तो डिफॉल्ट डायरेक्टरी कोन apache server रो var www.html var www.html default directory apache server ro linux machine रे right amazon linux ro apache server ro default root directory will be var www.html जोटी के हमर इंडेक्स फाइल रहइबो राइट एप्लीकेशन हमें पोस्ट करबा तो वर्तमान कोन अछि हम apache server इंस्टॉलेशंस करे तो मते कोन करे अछि किछि फाइल तादरे मते बन रखिवार अछि तो I'm going to write echo किछि HTML tag लिखुछि एठी हला HTML एठी कोन हबो var www/html right /index.html जस्ट गोटे स्क्रिप्ट लिखुछि जोडे echo माने जस्ट प्रिंट करिवो कोन प्रिंट करिवो ए टैग ता प्रिंट करिवो HTML टैग ता तो प्रिंट करे एटी कोड प्रिंट हबो माने रीडायरेक्ट मु करछि index.html जो कमांड मु सब लिखुछि हमर लाइनक्स क्लास रे मु तुमको पूरा डिटेल्स रे बतै देबी राइट तो वर्तमान हमें फोकस करबा हमर यूजर डाटा सेक्शन ऊपर echo द नेक्स्ट सेक्शंस मु चाहूछि किछि गोटे सेंटर कमांड दबा पाई राइट ताको चाहूछि br किछि दे दे माने किछि एक्स्ट्रा स्पेस दे दोछि मु राइट ब्रेक एक्स्ट्रा स्पेस okay now the same thing I need to do here also but this time I have to do double greater than for redirections in append mode okay then I can go with echo again this time I'll just write center commands here center tag okay center tag to make the text into center okay so this is HTML okay तमे HTML जदी सिखियार अछि तमे HTML सिखि परिबा किछि जदी वेब एप्लीकेशन डिजाइन कोच देन HTML CSS तुमको दरकार पड़ियो अदरवाइज नॉट डेवॉप्स पई दरकार नै एटा जे तुम टिके आईडिया अछि मते HTML पर मु लिखि दोछि हैला तो एटा दरकार पड़िबोनी तुमको सिखिया भाई जस्ट तमर क्यूरियोसिटी हिसाब रे तमे किछि डेवलपमेंट करिया को चाहौ वेब डिजाइन वेब डेवलपमेंट देन HTML इज मस्ट राइट तो एटा बेसिक दरकार हम तो मिटी कोन करना गोटे h1 टैग रे मु कोन करबी ना मु गोटे मोर ना लिखि देबी किबा हेलो टेम्पलेट something I just wrote it okay
देन तो मु कौन कली पेस्ट कर देली तो सेम थिंग मु कौन कली एक आउ गोटे करिके जस्ट एटा कि मोर S3 टैग दे दोची S3 टैग वेलकम टू क्लाउड क्लासेस cloud computing class okay welcome to cloud computing class simply हम हिसाब रे जा लिखि पारे मोर छोटो वेब एप्लीकेशन बनाउछि राइट तो मु कोन करी पुनी जेतु सेंटर टा मु स्टार्ट करतली सेंटर टा मु एंड कर दोछि but this time I have to give it this slash right to break it सेमती HTML स्टार्ट करतली टैग टा एंड करबी end tag right start tag और end tag एंड हे गला तो मोर HTML फाइल देखि करी मु कोन कली ना ताको सब रिडायरेक्ट कर देली कोडी index.html फाइल को तो मु एटी इंस्टॉल कली किछि फाइल बनेली रिडायरेक्ट कराय गला तापर मु चाहूची सेटा को स्टार्ट करिबली का अपाची सर्वर राइट तो टू स्टार्ट द अपाची सर्वर व्हाट्स द कमांड system ctl start httpd system ctl start http then राइट मोर सिस्टम स्टार्ट तो मु कोन करना यूजर डाटा सेक्शन रे बा बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट सेक्शन रे मु कोन कली ना ए सब ऑप्शन ऐड करी माने स्क्रिप्ट ऐड करी तो मते ए स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हबो केते बळे जेते बळे मशीन क्रिएट हबो तो जेते बळे मशीन क्रिएट हबो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस विल बी एग्जीक्यूट राइट सो सिस्टम सीटीएल स्पेलिंग ठीक अछि चलो सरला डन तो मते क्रिएट टेम्पलेट वर्जन तो नुआ टेम्पलेट वर्जन गोटे क्रिएट हो देन गोटे नुआ टेम्पलेट क्रिएट हो गला नुआ वर्जन तो मु सिलेक्ट करबी देखो डिफॉल्ट वर्जन अछि 1 बट लेटेस्ट वर्जन कोन अछि 2 लेटेस्ट वर्जन 2 राइट तो हमर लेटेस्ट वर्जन 2 हो गला देन नाउ लेट्स गो अहेड एंड लॉन्च लॉन्च एन इंस्टेंस ओके हमें इंस्टेंस गोटे लॉन्च करबा तो मु कहली लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट तो एठी हमको वर्जन वर्तमान सिलेक्ट करबा को पड़िबो राइट टेम्पलेट यूज कली तो टेम्पलेट यूज कला बे डिफॉल्ट नउची 1 बट हमको हम हिसाब रे हम 2 सिलेक्ट करबा देखो सेकंड वर्जन आसी गला राइट सेकंड वर्जन अछि डे 1.1 httpd तो मु स्पेसिफाई करि दैछि जे एथरे अपाची इंस्टॉल अपाची अछि राइट तो हम इंस्टॉल करि परिबा तो मु सिलेक्ट कली सेकंड वर्जन देन आउ किछ दरकार नै गो अहेड अब तमे जदि चाहछ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस माने धर दुईटा की तीनटा की 10टा मशीन क्रिएट करिया पय देन यू कैन गो अहेड एंड राइट इट हियर वर्तमान अछि बाय डिफॉल्ट एक नउछि गोटे नउछि मु चाहूछि मु दुईटा मशीन क्रिएट करी एट ए टाइम दुईटा मशीन सही टेम्पलेट यूज करी करिवो राइट तो हम गली क्रिएट कर नाउ लॉन्च इंस्टेंस डन तो केतरा मशीन क्रिएट करिवो दुईटा सेम टेम्पलेट मु इमीडिएटली दुईटा मशीन क्रिएट करू राइट गो टू लॉन्च इंस्टेंस go to instances now okay तो गोटे start running हे गलानी आ गोटे पेंडिंग रे अछि राइट तो just refresh it again wait for few seconds किछि टाइम नबो काहे कि जेतो हम यूजर डाटा सेक्शन रे से इंस्टॉल करिवो तापरे कुछ अपडेट करिवो few seconds extra it will take then it will be ready okay so hold on for few more seconds it is still initializing but that is okay sometimes it takes more time to initialize but by the time it will be done okay now let's select any one of the server now I got the IP address but IP address मिलला तो जेतु हमें अपाची सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल सरिछि हम एप्लीकेशन भी हमें बनै भी दैछ index.html तो मते किछि करिया पड़िबनी जस्ट मते एप्लीकेशन एक्सेस करिया केले मते कोन करिबे जस्ट आईपी एड्रेस कॉपी करि के पेस्ट करी राइट सिंपल जल्दी एग्जैक्टली जो पब्लिक आईपी सिलेक्ट करी एटा कली तो एटी हमें देखि परबे राइट हेलो टेम्पलेट तो एटी हमें किछि करिबो पड़लानी सब किछि मोर यूजर डाटा सेक्शन रे
दे देछि तो यूजर डाटा सेक्शन में कोन गले ऑटोमेटिकली से सर्वर इंस्टॉल कर देला वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल कर देला ता देरे हमरो इंडेक्स फाइल भी बने देला तो हेलो टेम्पलेट वेलकम टू क्लाउड कंप्यूटिंग क्लास जहां भी लिखला तो हाउ गोटे सर्वर जो हमें क्रिएट करछे डबल सर्वर क्रिएट करछे राइट नाउ लेट्स गो एंड गेट दैट आईपी एड्रेस आल्सो ए आईपी एड्रेस आनले तो हमें कोन करबा हाउ गोटे एड्रेस जाई तो ये मशीन रे भी राइट तो आम जितेटा भी चाहिए सेतेटा मशीन क्रिएट करते इजी रे गोटे सेकेंड रे खाली हम सिलेक्ट कले लॉन्च टेम्पलेट लॉन्च इंस्टेंस राइट डन इंस्टेंस क्रिएट हो गला तो हमर इमीडिएटली सरी गला तो वर्तमान कोन है ना आमे देखले ना केमती कोन आमे इंस्टॉल करि परिबा राइट एप्लीकेशंस यूजर डाटा सेक्शन रे आउ डायरेक्टली आमे एक्सेस करि परिबा तो जेतु आमे इथे एक्सेस कले आमे केमती कोथरे एक्सेस कले एचटीटीपी प्रोटोकॉल रे राइट आमे एचटीटीपी प्रोटोकॉल एक्सेस करिया पे आमे कोन व्हाइट लिस्ट करिया पड़िबो पोर्ट नंबर एचटीटीपी रो पोर्ट नंबर केते 80 एचटीटीपी रो पोर्ट नंबर हैला 80 तो अपाची रो डिफॉल्ट पोर्ट हैला 80 अपाची रो डिफॉल्ट पोर्ट हैला 80 एचटीटीपी अपाची गोटे कोन एचटीटीपी एप्लीकेशन सर्वर राइट अपाची एचटीटीपी सर्वर तो अपाची एप्लीकेशन सर्वर राइट तो एचटीटीपी रो डिफॉल्ट पोर्ट बा अपाची डिफॉल्ट पोर्ट 80 तो हमें 80 मेंशन करबा नले नले भी ऑटोमेटिकली 80 से सिलेक्ट करिवो तो ता पूर्व हम 80 की कोडी एक्सेस दाव पड़िबो सिक्योरिटी ग्रुप रे तो लास्ट क्लास में बतै दे सिक्योरिटी ग्रुप रे केम एक्सेस करिवा राइट तो दे देला पर तो हमें कोन करबा एबे लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू डिलीट दिस मशीन मु दीटा का मशीन डिलीट करिया को चाहू छी मोर बर्तन दरकार नै मु डिलीट करबी राइट तो कौन करबी टर्मिनेट करबे इंस्टेंस स्टेट एंड टर्मिनेट राइट टर्मिनेट हेलानी failed to terminate failed to delete an instance कौन पाई टर्मिनेट प्रोटेक्शन ऑन करिचे राइट तो एनेबल करिचे टर्मिनेशन प्रोटेक्शन एनेबल करिचे तो जतले एनेबल अछि तो सेते में हमें डिलीट करि परिबानी तो फर्स्ट कौन करिबा ना हमर ए जो मशीन को वन बाय वन हमें सिलेक्ट करिबा तो फर्स्ट सिलेक्ट दिस मशीन देन वी हैव टू डिसेबल द टर्मिनेशन प्रोटेक्शन राइट गो टू एक्शन सेक्शन को जीवो इंस्टेंस सेटिंग सेटिंग रे बहुत सारा ऑप्शंस अछि मु बते देबी सब सेक्शन तमे यूजर डाटा सेक्शन भी एडिट करियाले तमे करि परिबो राइट तमे जहां भी किछि करिवार अछि पडे करबो स्टॉप चेंज स्टॉप प्रोटेक्शन चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन राइट तमे चेंज करि परिबो राइट बट इंस्टेंस टाइप ता तमे चेंज करि परिबो नाही तो केतबळे इंस्टेंस टाइप ता मतलब मन रखतो बहुत इंपोर्टेंट तमे क्वेश्चन भी पचार परंती कैन वी चेंज द इंस्टेंस टाइप ऑफ ए रनिंग इंस्टेंस yes or no can we change the instance type of a running machine no so first we have to stop that instance then we will change it so what it says this action is available when instance is stopped okay जतबे stop रे थिबो तो हमें एटा को instance type change कर परिया तो हमको instance type change करे अछि instance type हमें काई change करिवा कहीं कि हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करिवा रिक्वायरमेंट कोन तो माने मते गोटे एग्जांपल दियो कोन पाई रिक्वायरमेंट हिसाब रे ठीक अछि गोटे रिक्वायरमेंट एग्जांपल दियो यस हमें जदि किछि अलगा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम किछि इंस्टॉल करिवा को चाहूचे कि हमर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करिवा को चाहूचे किछि स्टोरेज चेंज करिवा चाहूचे नो नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंस टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम आसुनी एएमआई रे आसुची हार्डवेयर रे आसी राइट किछि गोटे मते हमर रैम साइज बढ़ेवार अछि ईबीएस वॉल्यूम स्टोरेज बढ़ेवार अछि देन तुमको इंस्टेंस टाइप ता चेंज करिवो राइट तो वर्तमान मु कोन करछि ना इंस्टेंस एक्शंस को जाई करी इंस्टेंस स्टेट आउ चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को डिसेबल करूची ठीक अछि चेंज एनेबल अछि जस्ट ऑन सिलेक्ट इट हेगला द टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इज डिसेबल्ड सेव नेक्स्ट आमे जिबा आ गोटे actions then what we can do we can go here again instance setting change termination protection disable so दुईटा करो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन हमें डिसेबल कर देले
So now we can go ahead and delete those things. Now we can go ahead and delete those things, right? So हमें कौन करिवा actions, sorry, instance state and terminate. It लिखुची right? Termination protection disable अच्छी, then terminate. तो कौन करिवा ना देखो अबे terminate हो गया. Shutting down करची. First shut down करिवा machine, तापर terminate करिवा, right? तो आरंभ हो गया. Terminations done. तो এই टाइप रे तमे टेम्पलेट क्रिएट करि परिबो टेम्पलेट टू मशीन तापर तमे यूजर डाटा सेक्शन किछि भी चाहो छ अपडेट करिवा पे एडिट करिवा पे देन यू कैन गो अहेड एंड एडिट इट ओके एनी डाउट नो डाउट राइट ओके तो आजिर क्लास रे हम बुझले कोन टेम्पलेट विषय रे तो यूजर डाटा सेक्शन तो मते जदि बे किछि यूजर डाटा रे किछि चेंज करिवार अछि तो कोन करिवि मते धरो एप्लीकेशन रे किछि चेंज करिवार अछि तो कोन करबि यस मतलब बताओ मु करछि बर्तमान लॉन्च टेम्पलेट को जिमि तो लॉन्च टेम्पलेट रे मु एटा को मॉडिफाई करिवि राइट so I'll go ahead and modify it so what I'll do go to actions modify template I would a version name देबि right dev 1.2 HTTP 1.2 वर्जन देल राइट बाकी जहां अछि सेवा सेवा था सेया था बस मते चेंज करियार अछि यूजर डाटा सेक्शन राइट टर्मिनेशन प्रोटेक्शन एबे मु कोन करबी चेंज कर दोछि राइट तो टर्मिनेशन प्रोटेक्शंस डोंट इंक्लूड रही गला ठीक अछि बाय डिफॉल्ट डोंट इंक्लूड नाउ यूजर डाटा सेक्शन अच्छा यूजर डाटा सेक्शन टू सेट यू एक्चुअली मॉडिफाई जे तुम करूछि तो यूजर डाटा सेक्शंस कॉपी कर देतले इतांता तो जस्ट कोन करछि ना जो डाटा मु देइतली लास्ट ईयर रे तो मु सेठी कोन करछि ना सोर्स करि दोछि कोडु यूजर सोर्स टेम्पलेट रो यूज कर दोछि मतलब एटर मु सोर्स कर दोछि जा कॉन्फ़िगरेशंस राइट सोर्स हे गला राइट माने यूजर डाटा सेक्शन रे जहा थिबो वर्तमान मते सही ही आसी जिवो ता सहित भी टर्मिनेशन प्रोटेक्शंस ता भी ऑन हे जिवो कारण हमें 2 रे टेम्पलेट 1.1 रे हमें टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ता ऑन करितले राइट तो एटी ऑन एनेबल हे जाई देखलो तो मते डिसेबल कर दियो तो जेहेतु मु सोर्स करली कोडु प्रीवियस टेम्पलेट रू सोर्स कर में जहा थिला वर्तमान सही टेम्पलेट रे आसी गला राइट तो वर्तमान मु चलली नेक्स्ट कोन आसीबो ना आसीगला ऑटोमेटिक सब तो वर्तमान एटी किछि गोटे छोटो चेंजेस मते दरकार तो मु एटी कोन करली ना जस्ट गोटे मते किछि एप्लीकेशन रे चेंजेस दरकार अछि तो चेंजेस कली ओके किछि गोटे लिख देली बस एप्लीकेशन मोड चेंज हो गला नाउ लेट्स गो एट क्विकली क्रिएट टेम्पलेट वर्जन डन तो हमको जाइए इंस्टेंस रे लॉन्च इंस्टेंस करो अगेन लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट सिलेक्ट वर्जन सोर्स टेम्पलेट एंड मतलब वर्जन सिलेक्ट करे तो बे तीनटा वर्जन हे गला 1 2 3 राइट तो थर्ड वर्जन हमर अछि 1.1.2 एचटीटीपी अछि थर्ड वर्जन मतलब थर्ड वर्जन सिलेक्ट करली तो थर्ड वर्जन सिलेक्शन सर आउ किस दरकार नहीं लेट्स गो अहेड लॉन्च टेम्पलेट लॉन्च इंस्टेंस ओके so it's in pending state okay just wait for a few more seconds okay so it have start already started running so we can wait for a few more seconds so that whatever informations we had given in our user data section jaha bhi deitile seta properly install he jibo our apache server run habo amar apache server run hela pare ame check kari pariba right so just wait now let's go and select the ip address so public ip address okay let's go here so जहाँ हमें चेंजेस करते
our website is ready, right? Welcome to cloud computing in this one's classroom. जहाँ जहाँ आमे सब अपडेट करथिले हमर डिटेल्स अछि तो यही टाइप रो हमर सब टेम्पलेट तमे बनेबो आ तम रिक्वायरमेंट हिसाब रे चेंजेस करिवो न्यू वर्जन क्रिएट करिवो आ से टेम्पलेट को तमे यूज करिवो मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएशन, राइट? तो आमे पूरा बुझी गले लॉन्च टेम्पलेट केमती होबो यूजर डाटा सेक्शन रे केमती कोन ऐड करिवो केमती स्क्रिप्ट लिखिवो तापरे टर्मिनेशन प्रोटेक्शंस विषय भी आईडिया पाइले तमे नेक्स्ट क्लास रे बाकी हमें लाइनक्स ऊपर ही जिबा।